ही नहीं आती। यस मैम, ये टीम्स का ही आ रहा है। टीम्स का ही है। लैपटॉप असल में बाजी के पास है, वो वाली बाजी। क्या करूं, फाइल्स नहीं आ रही है ना बेटा? यस मैम, फाइल्स में ही होगा, ये ऊपर 3 डॉट्स जो बने हुए इसमें देखें। अच्छा ये देखो, अब खोल तो रही हूँ, क्या पता आप खुल जाए। अब नजर आया? यस मैम। Yes, ma'am, it's visible. चलो अल्हम्दुलिल्लाह, फाइनली कहीं ना कहीं पहुंच गई। अच्छा जी, so we were on the part, we were doing the theme of bingo. अच्छा girls, as we have already discussed repeatedly rather, that bingo is a game of cards, ठीक है? And the fiction, the अच्छा मेरी पिक्चर भी नजर आ रही है? क्या क्या नजर आ रहा है मुझे जरा मेरी तरफ से बताएं, क्या क्या नजर आ रहा है? बस मैम आपकी स्क्रीन है और वो आपका कैमरा नहीं है, बंद है। अच्छा चलो, कैमरे के बगैर भी गुजारा हो सकता है, दीदी है ना? हाँ अच्छा चलो, तो मैं इसलिए कह रही हूँ ना, मैं एंगल क्या रखूँ, ये ना फिर मैं ऐसे एंगल पे फोकस हो जाए जिससे मेरी कोई मतलब मोटापा नजर आना शुरू हो जाए। नहीं अच्छा मजाक कर रही हूँ वैसे। अच्छा गर्ल्स, नाउ द fiction that we are studying is more based in the Indo-Pak subcontinent, ठीक है? Like this story by Tariq Rahman, it is also he's a Pakistani writer. Then the next one that you are going to do is The Kingdom of Cards. That is also by an Indian author, Rabindranath Tagore. Most of you must have read it. कल कॉन्वर्सेशन में याद भी करा दिया था कि उसको पढ़ना है, और मेरे ख्याल में आयशा बीबी ने पहले ही पढ़ लिया था। चलो यानी एक आध किसी ने मुझे कहा था, मैंने पहले ही पढ़ लिया, तो शाबाश। अच्छा who wrote in Bengali language? That story is written in Bengali language, but it is a translation of that. अच्छा, and the next one, the third story, ये जो इस की सीरीज में थर्ड स्टोरी है नवाबुद्दीन इलेक्ट्रिशियन. That is also story, that is also a Pakistani writer, Mohsin Hamid, उसका नाम है. नहीं, sorry, it's by Danial Moinuddin. Mohsin Hamid is another writer, वो भी पाकिस्तानी है, but he is a youngster based in Pakistan, but he does not live in Pakistan. ठीक है? Now, in these three stories especially, एक तारिक रहमान जो पाकिस्तान में रहे, कुछ अर्सा बाहर भी, कुछ ही काफी अर्सा बाहर भी रहे, लेकिन उन्होंने अपना पाकिस्तान से लिंक नहीं छोड़ा. Then Rabindranath Tagore, he lived in Indo-Pak subcontinent, और इधर ही उनकी डेथ हुई सारा. Then this Danial Moinuddin, he is a person who spent his childhood in Pakistan, but he led most of his life, or rather he is leading the major portion of his life in अमेरिका और यूएस में रहता है. एंड जो दानियाल मुइनुद्दीन के लिए हम टर्म यूज करेंगे, दैट इज डायस्पोरा, DIASPORA. शायद मैंने पहले भी कभी वर्ड यूज किया होगा. डायस्पोरा लिटरेचर इज बेसिकली दैट लिटरेचर which is used by which is produced by, not used by, which is produced by those people who are aware of both the problems that are being faced by the colonizer and the colonized. ठीक है?
because most of these Tariq Rahman, Tagore, and Muinuddin, all of these they belonged to the country which was colonized. ठीक है, वो colonized से belong करते हैं, लेकिन या colonized का part है, but there is they know the perspective of the colonizer as well. If you remember, once I mentioned in any of your classes that the colonizer believes, या British ये कहते हैं कि British या all those people who came to rule us, the जो kingship का part थे, who came to rule the subcontinent, they were of the point of view that they intended to anglicize. एक term यूज होती है anglicize, ANGLACISE कर ले, अमेरिकन में ZE कर ले. Anglicize the आपकी क्लास नहीं हो रही? तो आप मुझे बोले तो सही. colonizer एंग्लिसाइजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आए थे. तो मुझे बोले तो सही. आप तशरीफ रखो. गर्ल्स प्लीज एक मिनट. मैम आप बैठ गए उधर, तो फिर क्लास नहीं शुरू हुई हुई. मैम अनम है वो. मैम अनम. अस्सलाम वालेकुम मैम. मैम आई एम इमान सईद's mother. Could you please confirm if English class is going on or not? Thank you. बस जब उनका रिप्लाई आएगा तो मैं बता दूंगी. अच्छा, एंग्लिसाइजिंग का मतलब क्या था बेटा? आई एम सॉरी सॉरी. तो एंग्लिसाइजिंग का मतलब ये था कि हमने इनको सिविलाइज करना है. ठीक है, दैट दीज पीपल who are living in these parts of the world, that is the Indo-Pak subcontinent especially, ठीक है, they need to be civilized. इनके अंदर तमीज नहीं है. अच्छा, अब तमीज तो वो पता नहीं सिखा के गए या नहीं सिखा के गए, अब ये आप लोग बेहतर जानते हैं. बट ultimately they left both their positive and negative impact on this area. अब उसमें जो एक इम्पैक्ट था जो हमें इस सारी बिंगो में जो हाईलाइट हुआ है, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द colonized and the colonizer. The colonizer believes that he has every right over the colonized and he can exploit the colonized to whatever extent he wants. ठीक है? And that is why the themes that are discussed here in this story especially, they do not only picturize, they do not only represent the tensions between East and West Pakistan, they are telling you about the situation or the relationship between the colonizer and the colonized. अच्छा, जो अगर आपको याद हो, when we were doing literary forms and movements, we did an analysis called post-colonial studies, जिसमें colonizer और colonized का बहुत ज़्यादा था. Here in Pakistan, in these three stories, these points are going to be repeatedly used. अच्छा, और these stories have been analyzed with the perspective of post-colonialism by numerous researchers. ठीक है, आपको ऐसी ढेर सारी स्टोरीज मिल जाएंगी जो कि इनके रिलेशनशिप के, कॉलोनाइजर और कॉलोनाइज के रिलेशनशिप पे.
if you have time, please have a look at that presentation. I believe मैंने कोई शेयर की होगी या कुछ ना कुछ शेयर किया होगा पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव का, जरा उसका देखिए तो सही, ताकि the things that we are going to do during this week, ये जो दो स्टोरीज हमने करनी है, you will be getting a better picture of those. Okay. So then the second theme is social injustice and equity. That is the people to whom this land belongs. Iman idhar aa, Iman ye laptop leke idhar aa. The land, the colonized people to whom this land belongs, they do not have any right to exercise control over their land, over their own land. इसको बंद करें और दोबारा ज्वाइन करें, क्रॉस करो. So they do not have any control over their own land. Rather, the control is in the hands of those people who are who belong to the who are the colonizers, and for whom understanding the problems, ठीक है, situation वो समझ सकते, but they are ignorant of the problems that are faced by the colonized. ठीक है, therefore they keep on compelling the people, the colonized people, to follow their own rules. They compel the people to follow their own their laws, the laws of the colonized. ठीक है, so which results in social injustice. उनके राइट्स भी एक्सप्लॉइट होते हैं, उनके जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं. देन colonial mindset is that they are the others. ठीक है, the colonizers believe that the colonized are the others, they are against us. वो उनको एनिमी समझते हैं, एंड वाइस वर्सा वो इनको एनिमी समझते हैं. So this story also shows you the colonial mindset as well. Then comes the autonomy, the theme of independence, and the importance of independence and liberty in the lives of human beings. Okay, they are also this has also been shown through this story. Then social hypocrisy. Now somebody, ठीक है, अब मैं उसका नाम इसलिए नहीं लूंगी क्योंकि अब क्लास में कुछ ऐसी बातें शुरू हो गई कि वो इस कॉलेज का है और फला दूसरे कॉलेज का है, तो विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. मैंने तो कभी ये नहीं किया कि जो बाहर के बच्चे हैं उनको मैं बिल्कुल तवज्जो ना दूं. आई थिंक मेरे लिए आप सब सेम है, क्योंकि सब एक ही सफ में खड़े हो गए. मैं मूदो आवाज, सारे के सारे निकम्मे. इस दफा का जो टेस्ट मैंने देखा ना, आप लोगों के करतूत, तो किसी के 6, किसी के 5, लाइक जो हाईएस्ट गए हैं वो 6 गए, किसी के भी 7 नहीं है, 7 भी नहीं है. अब तो सबके बाइक्स बंद होंगे, अब तो किसी की हंसी भी नहीं निकलेगी. तो किसी ने उससे मुझे क्वेश्चन किया दैट मैम, if like we are convinced that our forces, यानी जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, आर्मी है, they fight for our rights, they fight for our liberty, they fight for on our behalf. ठीक है, लेकिन क्या जो उन्होंने वहां पे किया, दैट इज जो इज्जत पामाल की, जो मतलब जिस किस्म का ब्लडशेड हमारी आर्मी ने भी किया, उनकी आर्मी ने भी किया और हमने भी किया, तो क्या ये रियलिटी है? तो रिमेंबर गर्ल्स दैट देयर आर ऑलवेज 2 साइड्स ऑफ अ कॉइन. ठीक है, अगर एक तरफ 5 रुपए लिखा हुआ ना, तो दूसरी साइड पे क्या बना हुआ है? चांद तारा. ठीक है, तो हमें ये देखना चाहिए कि अगर 5 रुपए का कॉइन भी है तो उसके पीछे भी एक रियलिटी है
you cannot look at one perspective. Social hypocrisy क्या थी? Both the armies. मैम अनम कह रही है जरा वेट करें, मैम अनम कह रही है वेट करें, मुझे मेरे ग्लास में पिला दो। हिपोक्रेसी ये थी, अब वो चली गई मुझे। अब अगर सिर्फ हमारी औरतों की इज्जत पमाल हुई होती ड्यूरिंग द स्ट्रगल ऑफ पार्टीशन, तो फिर तो हम मजलूम होते। क्या इधर की आर्मी ने उधर की औरतों की इज्जत पमाल ली थी? क्या इधर के लोगों ने उधर के लोगों की, या हिंदू या सिख जो भी थे, औरत औरत है बेटा, उसकी इज्जत इट्स वेरी प्रेशियस। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ हम मजलूम हैं? हिपोक्रेसी ये है when you are putting up a face of honesty and commitment and dedication and that you are very righteous होता बड़ा नेक परवीन जिसे हम कहते हैं। तो हिपोक्रेसी ये है कि आप शक्ल से तो आप ये दिखा रही है, बट इन रियलिटी यू आर डूइंग समथिंग एल्स। ठीक है, तो सोशल हिपोक्रेसी we could see it not only in the case of the army, we could also see it in the case of the bureaucrats। ठीक है, जो प्लानिंग के लिए बिठाए जाते हैं, जो आप में से जो बहुत सारे लोग CSS के लिए एस्पायर कर रहे हैं, उनको पता है वो CSS जब आप कर लेते हैं तो वो ब्यूरोक्रेसी में जाते हैं। ठीक है, so what is the purpose of bureaucracy? Their aim is to make such policies for the people। आपने कॉमनर्स को सामने रखना होता है कि कॉमन मैन के फायदे में क्या जाएगा, लेकिन रिजल्ट क्या होता है? इंस्टेड ऑफ focusing on the interests of the commoners, they make such policies which favor the upper class only। या ताकतवर को किस तरह कर सकते हैं? तो आपकी सोशल हिपोक्रेसी वहां पे नजर आती है। एंड एज इट हैज बीन टोल्ड इन द स्टोरी बिंगो एज वेल, दैट इट वाज these bureaucrats, so called our superiors, जिन्होंने पॉलिसीज ऐसी बनाई जिसमें सिर्फ अंग्रेज शामिल नहीं था, दे वर ऑल्सो पीपल हु बिलोंग टू अस, जो यानी ये पाकिस्तानी थे या जो मुसलमान भी थे, उन्होंने भी ऐसी पॉलिसीज को सपोर्ट किया विच लेड टू द सेपरेशन ऑफ पाकिस्तान, जो ऑलरेडी फिजिकली सेपरेट था, एंड इट अल्टीमेटली it resulted in कभी दलदल देखी है? दलदल में आप चुप कर दो, जो चीज मतलब दलदल वो गीली मिट्टी होती है जो अपने अंदर सब कुछ ले जाती है। एंड अल्टीमेटली these policies compelled Pakistan to quagmire, उस दलदल को कहते हैं quagmire of corruption and dishonesty and hypocrisy and everything. Then another very important theme that has been discussed in this especially is that religion cannot bind you। हमारा point of view, हमारा देखो, I am not against any religion, I am neither against any sect nor am I against any religion, but when Pakistan came into being, our concept was that this religion is going to be a binding factor in the people of Pakistan। बाइंडिंग फैक्टर होता तो आज तक हम लोग वो जो फला जगह सुन्नी और फला जगह शिया और फला जगह पत्नी हंफी और फला जगह अहले सुन्नत वल जमात और पत्नी क्या क्या किस्म की चीजों में ना पड़े होते। रिलीजन डज नॉट बाइंड यू, बिकॉज रिलीजन क्या, अगर आपको ह्यूमैनिटी नहीं बांध सकती तो रिलीजन तो बिल्कुल ही नहीं बांध सकता। ठीक है,
आपका जरा सा नमाज पढ़ने का तरीका आपको डिफरेंट कर देता है, जरा सा आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आपके मिलने जुलने का अंदाज है, वो डिफरेंट कर देता है। अच्छा, देन रेड टेपिज्म, ये जो आपकी अभी ब्यूरोक्रेसी का जिक्र किया, दैट इज रेड टेपिज्म इज जो द फॉर्मेलिटीज दैट आर अ पार्ट ऑफ आर ऑफिशियल सिस्टम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ यू लुक एट आवर सिस्टम, इफ यू नीड टू गेट न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, एक सिंपल सी बात ये है, आपने नई बिजली का कनेक्शन लेना है, तो उसके लिए क्या होता है कि आप सबसे पहले एक टेबल पे एक विंडो में लेट से लेके आते एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन, अच्छा आपको कहते हैं जी 2 महीने बाद आना, 2 महीने बाद जब आप जाएंगे वो कहते हैं ओहो वो तो जी फलाने साहब के पास जानी थी और वो फाइल असल में दब गई, ठीक है। अब वो फाइल जब दब गई तो और लेट से वो कहते हैं कि जॉइंट सेक्रेटरी के पास जानी थी, हालांकि जॉइंट सेक्रेटरी उस लेवल पे नहीं होते, लेकिन डायरेक्टर किसी के पास जानी थी या डिप्टी डायरेक्टर के पास जानी थी, तो अच्छा वो कहते हैं कि जी आप उनसे क्वेश्चन करेंगे, अच्छा ये डिप्टी डायरेक्टर साहब किधर बैठे होते हैं, तो वो पता ये चलता है कि बिल्कुल साफ वाली टेबल पे या बिल्कुल नेक्स्ट रूम में वो डिप्टी डायरेक्टर बैठे होते हैं, और वो जो फाइल इस एक डेस्क से दूसरे डेस्क पे जानी थी वो नहीं गई होती, ठीक है। आप ऐसा करें ना सर, 3 महीने बाद आते, आप 3 महीने बाद जाते हैं, आपका घर भी तैयार होने वाला होता है, लेकिन अब आप उसमें सेटल नहीं हो सकते बिकॉज यू डू नॉट हैव अ प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, ठीक है। गारों में अगर आपने अगर आपको जिंदा रहना आता है फिर तो आप रह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, यहाँ पे नहीं होता। तो हियर अच्छा 3 महीने बाद जाते वक्त ओ हमारा जो लाइनमैन है ना वहाँ का, वो उसकी सास की खाला की डेथ हो गई है, ठीक है। अब वो जब तशरीफ लाएंगे फिर ही कुछ होगा। अब वो जब डेथ वाला मामला ऐसा होता है जब इंसान आगे कुछ कह नहीं सकता, तो आप वो भी चेलन करके आएंगे, ठीक है। अब वो चेलन के लिए आप 40 दिन इंतजार करेंगे, वो पूरे होंगे, तो फिर वो, तो रेड टेपिज्म इज व्हेन यू हैव टू फॉलो सर्टेन सर्टेन बाउंड्रीज, ठीक है। कुछ ना कुछ आपको अपना काम कराने के लिए इन ऑफिस के लोगों के साथ की मिनटें समाजतें करनी पड़ती हैं, इन लोगों की सुपीरियरिटी जो होती है उसको रेड टेपिज्म कहते हैं। So that theme has also been mentioned here. Then symbols, the symbols that have been used. मेरे ख्याल में symbols मैंने करवा नहीं दिए थे, girls. Have we done the symbols? Is anyone there? Yes मैम कर लिए थे symbols. अच्छा, Yes मैम हो गए थे symbols. तो themes भी हो गई होंगी। Yes मैम हो गई थी. आयरनी करवानी थी आपने, और वो ये जो फातिमा सैयद साहिबा। जी मैम ये अब क्या आयरनी है कि तुम इस वक्त मुझे कह रही हो कि आयरनी करवानी थी? मैं जरा चली गई थी। फातिमा आयरनी से आयरनी, ठीक है। ओके, so the dramatic irony here is that there were initially Pakistan was one country, East Pakistan and West Pakistan, but they had 2 parts which were physically separate, ठीक है। प्रोविंसेस तो होते हैं लेकिन उनके ये नहीं होता कि आपका एक प्रोविंस दूसरे से कनेक्टेड ना हो। देयर ऑलवेज कनेक्शन बिटवीन दी geographical areas. So there the first major element of irony or the point of irony is that the same country, one country, had been
separated physically separate. Then the same country, physically to separate हुई, they started to develop this census, and they had a relationship, they had a very restrained sort of a relationship. ये भी आयरनिकल है कि आपकी एक मुल्क हो और एक पार्ट जो है वो दूसरे पार्ट का दुश्मन बन जाए, ठीक है। हम जो मर्जी खेलें, बिकॉज फ्रेंड में यूजुअली इन्हीं की हुकूमत होती है, पीपीपी की हुकूमत होती है, बट कभी भी हम ये जरूर हम कहेंगे कि जी पंजाब का हिस्सा वहां चला गया या उधर का हिस्सा यहाँ आ गया, सेंट का हिस्सा यहाँ पे आ गया, but we would never create such differences that would result in the disharmony, ठीक है, मतलब आपकी यूनिटी खत्म कर दे। Then the constant grooming of the Tajasir was also very, it was very ironical. अगर आपका, if he is a Pakistani, he should be dealt with like with in a way which suits the people of one country. आप पाकिस्तानी को पाकिस्तानी की तरह की रिस्पेक्ट में उसको आप if you keep on degrading that person by calling him a joker or a sissy or a traitor or a bingo, whatever, that is something bad. Then a friend is turned into a killer, ठीक है। उसका अपना, that is, here we find that Safir turns out to be a killer, and he उसका जो मर्जी reason though he could not tolerate or he could not accept that the friend's mother would be leading a very bitter life from now on. उसे पता था कि अगर मैं इसको मार भी दूंगा, वैसे ही बेचारी वो जिंदा ही मर गई है, जिसकी दोनों बच्चे मर गए हैं उसकी नजरों के सामने। लेकिन जी बेटा, does anyone of you want to share something? अच्छा, okay. The friend turning into a killer, that is also ironical. Situational irony is that the protector becomes the killer. For example, the army becomes the killer, Safir becomes the killer, and in that case, even this person, Tajasir, also became a killer. Okay? And this is very ironical, situational irony. Unity, we do not find a unity in any of the people in this story. Then you have verbal irony as well. Verbal irony, aapko bingo, the word bingo, traitor, sissy, the clown, when they are making fun of Tajasir, that is also that is also verbal irony. Then notes में मैंने आपकी 2-3 points लिख दिए थे. This is the first major point is that the register that has been used, अगर आपको याद हो, that day I told you a term, register. Register is basically a language or dialect of a language which is particular to a professional group, ठीक है। खास तौर पे जो जुडिशल की, जैसे कोर्ट की लैंग्वेज होती है, दैट इज कॉल्ड जुडिशियल रजिस्टर। आर्मी की लैंग्वेज को मिलिट्री रजिस्टर कहते हैं। एंड वी कम टू नो दैट तारिक रहमान हैज मेड a lot of use of military register, and because his father had been working at PMA as an instructor of mathematics. Then the conflict is between man versus man. We do not find any natural
thing or any supernatural thing fighting against man. Rather, this is a conflict between man and man. Then the premise is inequity ultimately leads to revolt. जो आप अगर आप किसी के साथ there is some sort of an imbalance, it is going to ultimately result in disaster. Then the other literary devices that have been employed are register. First of all, military register, the words like battalion, drill, sergeant, CSM, FSMO, D-Day, infantry, CO. These are all, part of the military language. Then you have alliteration as well. Now, there's why I discussed Danial Moinuddin and Tagore and Tariq Rahman earlier as well, because they are local writers. बेशक अगर diaspora भी हैं, but they have an influence of local writing on them. They do not make use of a lot of literary devices, like ठीक है थोड़े थोड़े उन्होंने यूज किए हुए, but जो हम पहले लिस्ट कर रहे होते थे literary devices, for example alliteration, assonance, you would find lesser use of that because they are basically focusing on the setting. इन तीनों का focus ज़्यादा setting पे है instead of just characters. We have an alliteration here in one of the the lines, the foul orders of fate-filled fat men. That fat men are those people who are not only physically obese, मतलब मोटे हैं, but these fat men are those who have been constantly sitting, making policies, and those policies are not in favor of anyone. Those policies are basically they result in failure. ठीक है, तबाही में उनका result होता है, and because of the failure of such policies, there is a foul smell as well. So foul, filled, fat. So alliteration has also been used. Then we come to any question girls regarding this? No, ma'am. किसी का भी नहीं है? Girls, any question? No, ma'am. तो बहुत सारे लोगों की तो मैंने कोई आवाज ही नहीं सुनी जब से हमारी ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं। नाशीन भी लगता है मुझसे नाराज होकर बैठी हुई है ना? नाशीन, आर यू देयर? मैम वो नाराज नहीं हो सकती। वो नाराज नहीं हो सकती? ना मैम। तो फिर वो मुझसे बातें नहीं करती है। बातें ऐसे नहीं करती होगी, वो आपसे नाराज नहीं हो सकती। अच्छा लारे, मैं वैसे तुम्हारी ना अक्लमंदी को दाद देती हूँ। क्यों मैम? ये हम अलग बात करें। वो इधर मैंने नहीं बात करनी। बाकियों को सस्पेंस में डाल के बेटा बात करेंगे ना। ओके। जैसे मेरी बेटी की बात सुनी है, वो कह रही है मामा आप बहुत शरारती हैं, बच्चों बेचारों पे जुल्म करती हैं। जैसे मजाक एक साइड पे, वैसे वो ना मतलब उसकी आप एक तरह से इंस्पिरेशन है। नासीम की? यस मैम। ये आपकी मोहब्बत है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, अल्लाह का बहुत बहुत करम है कि आप जैसे अच्छे लोग मुझे मिले, अच्छे बहुत अच्छे लोग। आप चुप करो। अच्छा जी, so we have to start with now the next story जो आयशा बीबी हमें पहले बताई। आयशा बीबी
आयशा बीबी किधर है? आयशा बीबी ने पढ़ा हुआ है। आयशा बीबी किधर गई हो? चुप करो। ज़ारा मैं तुम्हें बेटा बाद में रिप्लाई करूंगी। ज़ारा पता नहीं क्लास में है या नहीं। मैं बाद में रिप्लाई करूंगी। जी जी। So, has anyone of you read the next story, The Kingdom of Cards? मैम ये मैंने भी पढ़ी थी, ये अजीब सी है। अजीब सी है। सब पढ़िए। मतलब यस मैम, ये वाले कार्ड्स वो वाले कार्ड्स, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। तुमने कार्ड्स नहीं देखे? रुको, वो वाले जो सात के पत्ते होते हैं, वो देखे। वो देखे हैं ना? यस जो जब whenever you are playing cards ना लारेब, उसको जैसे हम यूं शफल करते हैं ना, जैसे मर्जी कर लो, इसी तरीके जैसे आपके ओनो खेलते हैं बच्चे, यस मैम। वो एक गेम नहीं होती, तो इसी तरह की आप पीपल प्ले विद कार्ड्स, एंड कार्ड्स इज वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट गेम्स दैट हैव एवर जो हमारे कल्चर्स का पार्ट है. बट हियर द वर्ड, द टर्म रादर, द किंगडम ऑफ कार्ड्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और वो क्यों इंपॉर्टेंट है? Cards have not only been used positively, सिर्फ पॉजिटिव गेम्स के लिए नहीं खेला जाता. आपको पता है कार्ड्स हैव आल्सो बीन यूज्ड फॉर गैम्बलिंग. ठीक है, गैम्बलिंग. गैम्बलिंग क्या होती है? आप जुआ. अरे तुम्हारी आवाज कटती है जरा. मैं कह रही हूँ आप नजर आ गई हैं। मैं नजर वो मैं तो वो बंद कर लूँ ना, पता चले इफ somebody enters the meeting now, वो कहेगा कि सामने तो वो एक लगी हुई है, तो पर हाँ ये कार्ड्स तो इसमें कहीं है नहीं, तो इस वजह से. So cards basically have been used for gambling. Gambling is जुआ करना. Please. Okay. The kingdom of cards basically on a superficial level, it is like like a place where cards are living. Okay, but here cards are basically used. If do you remember when we were doing the Lord of the Flies? We did a question that the Lord of Flies is an allegory discussed. Allegory का वर्ड हमने तब यूज किया था, यस याद है? मैम। तो allegory Yes, क्या ma'am. होती है? Allegory is when some symbols are used to represent ideas, ठीक है, या things. For example, here, if you see, there has been a repeated use of the word, of the words that they could not think, they could not feel, they were living just like, they were living by the laws which had been made in the past, पता नहीं पुराने laws से बने हुए थे. So basically, this story, the Kingdom of Cards is an allegory, and it is a political allegory. ठीक है? Political allegory or social allegory, which is telling you about the condition of particularly India. ठीक है? Particularly India and generally of all the third world countries.
actually third world countries. Third world countries, why do we keep on discussing the third world countries? Because these countries are underdeveloped countries. Usually, most of them are underdeveloped countries, and they are those countries which are producing much of the raw material that is used by the developed countries in order to manufacture goods. ठीक है, तो ये लेबर वाली कंट्रीज होती हैं, मजदूरों वाली कंट्रीज होती हैं. These are basically poor countries who are dependent on the rich countries to provide for them. ठीक है, वो सारी इनकी जरूरतें पूरी करती हैं. Now, no country or no department, कोई खैराती इदारा नहीं होता. खैराती इदारा जो होता है ना, वो लिखता है कि ये खैराती इदारा है. When they are helping you, they need something in return. ठीक है, आप अगर कहते हैं ना कि अमेरिका ने आपकी फलां स्टेटमेंट, they acknowledge that and they reiterated that, और उन्हें इस किस्म के वर्ड यूज, they have their own interest behind such statement. ठीक है, तो ऐसे नहीं होता कि जी हर कोई आपके बगैर मतलब से आपको हेल्प करेगा. अगर फॉर एग्जांपल मतलब मोदी ने आपका कोई कमेंट आपकी गवर्नमेंट का मान लिया, उसके पीछे भी कोई ना कुछ होगा. इसी तरह अगर सऊदी अरब ने आपकी किसी स्टेटमेंट को ना सिर्फ एक्सेप्ट किया बल्कि उसको रीइटरेट भी किया, तो उसके पीछे भी मतलब होगा. कोई भी हमें ऐसे, अगर कोई हमें $6 बिलियन दे देता ना, कोई ऐसे नहीं दे देता हम कि जी चलो तुम खुदा वास्ते रख लो या इस तरह. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. देयर आर ऑलवेज इंटरेस्ट बिहाइंड दीज, और ये प्रॉपर पॉलिसीज बनती हैं. बाकायदा ये जो ब्यूरोक्रेट्स वगैरह होते हैं या डिफेंस की जो हमारी वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे मेक सर्टेन प्लान जिससे आप भी अपना भला भी सोचें और दूसरों का भी भला सोचें. अच्छा, इधर एक क्वेश्चन आता है, डू दीज underdeveloped countries can they be really of interest to the developed countries? Yes or no? क्या उनसे मतलब निकल सकता है? आपको क्या लग रहा है? चलो एक क्वेश्चन है. आप लोगों ने पाकिस्तान स्टडीज लास्ट सेमेस्टर में किया था. CPEC जो द होल ऑफ दैट प्रोजेक्ट, चाइना हमें खैराती तौर पे बना के दे रहा है? नहीं मैम. नहीं मैम, उसके अपने बेनिफिट्स नो मैम. कभी भी ऐसे नहीं हो सकता. हमें कि उनके अपने इंटरेस्ट ना हो. हमने जहाँ पे व्हेन वी नीडेड चाइना, ठीक है, इट इज अ फेयर वेदर फ्रेंड. there have been instances where we needed China the most and they remained silent. ठीक है, जब आप खामोश हो जाते हैं ना, दैट इज द डिप्लोमेसी. वो आपकी और आप हाँ या नहीं कह रहे, तो आपकी खामोशी का मतलब ना ही होता है. ठीक है, यही बात है. यस मैम, थैंक यू. है ना? तो here being Pakistani, we realize that ये जो आपको सिचुएशन समझ नहीं आ रही ना इस स्टोरी में, बेसिकली द किंगडम ऑफ कार्ड्स, somebody from outside, ठीक है, the prince, पढ़ा है ना उसमें, there is a prince who wanted adventure. So here the kingdom of cards can be taken as India, and the prince can be taken as the British Queen. ठीक है,
दो शी डिड नॉट कम herself, खुद रूल करने नहीं आई थी, बट शी sent her her representatives were here, ambassadors थे, सारा कुछ था, and they were here to implement the policies that were made in Britain. ठीक है, इंटरेस्टिंगली आप देखें, अगर एक सिंपल सी पॉलिसी को देखें, अपने इधर कोई आपने पॉलिसी लेट से एक सिंपल सी पॉलिसी जी, क्योंकि इंग्लैंड में सारे सूट पहनते हैं, तो यहाँ पे भी सारे सूट ही पहनेंगे, ठीक है। आप बताइए इधर का मौसम और उधर का मौसम सेम है? नो मैम, बस वो इन्फ्लुएंस है एक बंदे का कि हम उसको इंस्पायर हो जाते हैं फौरन एक दूसरे को देख के, सीख जाते हैं। ये अब बात जरा याद रखना, इसमें मैं एक और बात ऐड करूंगी, ये तो बाद में आता है, ठीक है, ये बाद में बता, ठीक है। हाँ, पोस्ट कॉलोनियल कॉन्सेप्ट में देयर इज अदर वेरी, अच्छा ये अब याद रखना फातिमा, ये मैं फिर बात, पहले अभी इसको देखो, आपके क्या आप में से हर बंदा जो फार्म्स में भी काम कर रहे हैं, लेट्स से इन्होंने पॉलिसी बनाई दैट एवरीवन इज गोइंग टू वेयर 3-piece सूट्स और टाई लगाएगा। अब एक मजदूर ट्रैक्टर चला रहा है, ठीक है, अच्छा चलो ट्रैक्टर भी नहीं चला रहा, हमारे से तो बहुत सारे उसके पास ट्रैक्टर्स नहीं है, जो वो गाय ये गाय वाली जो ट्रैक्टर क्या कहते हैं उसको, हल चला रहे, अब उसने पहना हुआ 3-piece सूट, ऊपर चिलचिलाती गर्मी सूरज है, ठीक है, तो आप बताएं इज इट अ यूजर फ्रेंडली पॉलिसी? हम जो टर्म यूज, नॉट एट ऑल, ठीक है। इसका क्या मतलब है दैट द पॉलिसी विच वाज मेड इन ब्रिटेन, ठीक है, उन्होंने यही कहा था ना कि हमने इन्हें एंग्लिसाइज करना है, हमने इन्हें सिविलाइज करना है, तो जो पॉलिसी वहां पे बनाई गई उधर की दे केप्ट इन माइंड द एनवायरनमेंट, द एटमॉस्फेयर ऑफ द पीपल ऑफ द प्लेस वेयर दे आर लिविंग इन, ठीक है। इसका मतलब ये कि इधर के लोकल लोगों के इंटरेस्ट को नहीं सोचा गया, ठीक है, लोकल लोगों के इंटरेस्ट को नहीं सोचा गया। अच्छा, इसी तरह फॉर एग्जाम्पल आप अपने जरा मुल्क की इसको समझें, एनवायरनमेंट को समझें, इफ अ पर्सन इज यहाँ पे क्योंकि बहुत सारी चीजों में अभी भी कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं हो रहा, डेटा इकट्ठे करना है, और लेट्स से डेटा क्या इकट्ठे करना है कि कितने लोगों ने वैक्सीनेशन कराई है, एंड इट इज जून इज ऑलमोस्ट स्टार्टिंग, ठीक है, वो कोई बंदा आपके पास 3-piece सूट पहन के आएगा दोपहर के 2 बजे, और वो आके आपसे पूछेगा जी एक्सक्यूज मी सर, would you got yourself vaccinated, ब्रिटिश एक्सेंट में, तो पहले घर में तो वो पूछ सकता है, लेकिन गली के 10वें घर तक उस बेचारे की पहले टाई खुलेगी, फिर खुलेगी Yes. और उसके बाद फिर वो शायद वो शर्ट भी और कोट भी उसने हाथ में पकड़ा और बनियान पहन के वो फिर रहा, ठीक है। तो अच्छा, अब लेट्स से, अब कमिंग बैक टू फातिमा सैयद पॉइंट, ये जो आपकी पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज हैं, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ मिमिक्री, ठीक है। लेट्स से पॉलिसी तो वहां से नहीं बन के आई, ठीक है, बट द पीपल हु आर रिप्रेजेंटिंग द कॉलोनाइजर वो 3-piece सूट पहन के फिर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो भी वॉइस राय फिर रहा है, या मतलब जो वॉइस राय है वो फिर रहा है, तो इधर के लोगों को वाह जी वाह, आज तो मेरा जो है ना इतना प्यारा वो लग रहा था, हैंडसम लग रहा था, तो अब मुझे बिना 3-piece सूट पहनने चाहिए। ये मिमिक्री का जो कॉन्सेप्ट है, फातिमा कह रही है कि हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं,
The interesting thing is that we are not influenced by the superior amongst us. ठीक है, जो हमें बेहतर होगा. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर आपने ये पंजाबी पठान को नहीं फॉलो करेगा या पठान बलोची कल्चर नहीं फॉलो करेगा, लेकिन उनका क्योंकि वो गुरुओं का कल्चर है तो वो जरूर फॉलो करेगा. अब उसमें एक आपने लेट्स से कहा कि जी अब मेरे पास तो ढेर सारा पैसा आ गया और मैं 3 पीस सूट पहन के फिरा, लेकिन आपको ये भी नहीं पता. अच्छा, एक इंटरेस्टिंग मुझे बात याद आ गई उससे. when my children used to be in the college nursery, so there used to be an आया, वो बेचारी, उनको ना डाइपर का यूज नहीं आता था, तो वो क्या करती थी कि ना उन्हें ये नहीं पता था कि जो चौड़े वाली साइड है ना, ये मैं भी कहती हूँ, चौड़े वाली साइड जो है वो बेबी के नीचे आप डालेंगे और तंग वाली साइड ऊपर. अगर आपने कभी डाइपर देखा, जिन लोगों के छोटे बहन भाई उन्होंने देखा, और तंग वाली साइड ऊपर आएगी. ठीक है, अब वो क्या करती थी बेचारी कि ना वो तंग वाली साइड नीचे रखती थी, उनका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा, और वो बच्चे को ऑल द वे यूं करके और पीछे जाके बेचारे की इधर कमर के ऊपर टेप बंदी होती थी और दूसरी साइड से भी इसी तरह बच्चा इतनी देर में तंग हो जाता था. अब हमने उनको फॉलो तो कर लिया, बट द वे वी हैव फॉलोड इट, तो वो ना कब्बा चला हंस की चाल तो अपनी चाल की भी भूल गया. व्हेन वी बिकम मिमिक वी रिजल्ट इन समथिंग रिडिकुलस. ठीक है, हिलेरियस. हम लोगों के हम इंस्पायर तो हो गए, हमने फॉलो भी करना शुरू कर दिया, बट द रिजल्ट इज समथिंग हिलेरियस. और यहाँ का क्या हिलेरियस रिजल्ट था जो अब द किंगडम ऑफ कार्ड्स की हम डिस्कशन में कल इंशाल्लाह करें. ठीक है, so those of you who have not read it, please give it a reading and we'll continue with this tomorrow inshallah. Okay? ओके मैम. Okay. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. Allah. अच्छा, और बेटा कोशिश करें अगर मैं अपने लैपटॉप पे देखती हूँ तो मैं शेयर भी कर दूंगी आपके साथ वो जो पोस्ट कॉलोनियल वाला कुछ स्लाइड्स थी. ठीक है, अल्लाह हाफिज.
है